Hello everyone, welcome back to our channel Amit Education. Today we talk about the important question that is very important for your coming examination. So let's start without any delay. The first question is from chapter number 8 and we know the chapter number 8 is the highest weightage chapter जिसका weightage होने वाला आपका 10 marks. So जो हम focus करेंगे यहाँ पे. So first question, what is lever? Write the types. Given one example of each type of lever which are body used during various activities. This question is of pure 5 mark क्वेश्चन कि सबसे पहले आपको पता होगा लीवर क्या होता है. सो लीवर इज दिस मैकेनिज्म. उसके तीन टाइप्स होंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर. एंड उनको आपको किसकी हेल्प से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल. आई गिव द वन सजेशन व्हेन यू आर राइटिंग दिस वन, okay, about the lever, so always draw the diagram. Question number 2, how to calculate BMR, show in details. So this is also 3 mark question. 1 mark is for the formula, one is for the calculation. So BMR is the basal metabolic rate. With help of this we can find out the number of calories required by a person in a day to sustain their life. Means एक minimum energy हमें कितनी calories requirement होंगी उसको हम calculate करते हैं with the help of the BMR. The full form of BMR is basal metabolic rate. So it's about the metabolic rate. So this is the full form of BMR. Next one is question number 3rd. Explain Newton's law of motion and give example from sports. So this is very common one. This is also from chapter number 8. So there are 3 laws of motion. First law of motion, law of inertia. Second one is law of acceleration. Third one is the law of action reaction. So there are the 3 types of Newton law of motion and you have to support with your example from sports. Question number 4. Explain soft tissue injuries and its types. So we know that the injuries are divided into 2 parts, hard tissue injury, soft tissue injury. Hard tissue injury are just like the dislocation or the fracture, and soft tissue injury वो इंजरी जो बेसिकली आपके स्किन तक वहां पे रहती है. स्किन के बाद में अगर हम वहां पे bones तक पहुंच जाएंगे, so this one becomes the hard tissue injury. In soft tissue injury there are several types of injuries are there, just like the abrasion, contusion, stain, sprain are some soft tissue injuries. Question number 5 from chapter number 5, nutrition sports. Compare any 3 fat soluble vitamins. So fat soluble vitamin कौन से होंगे? A, D, E, K are the fat soluble vitamin, and what the water soluble vitamin? Only B and C are the water soluble vitamin. How we identify? Where we use the capsules, it means it is fat soluble. Where we use the tablet, it means it is water soluble. क्यों? क्योंकि टेबलेट का अगर पानी हम डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि अब वो उसके अंदर घुल जाएगी, लेकिन कैप्सूल्स पानी के अंदर नहीं घुलेगा क्योंकि वो किसके अंदर था? कोटिंग के अंदर आएगा. सो इट इज फैट सॉल्युबल. क्वेश्चन नंबर 6. Explain fixtures. Make league cum league fixture of 18 teams. So basically we have the 4 types of the tournament: knockout, league, combination and the challenge. Combination is the combination of knockout and the league, and challenge is the 4th one. So knockout means it is also known as the elimination tournament, or we can say do or die. League is also known as the round robin or Mr. Berger or Berger tournament. League fixture we control with the help of this one. One is staircase method, the most easiest one, just looks like a stair. Cyclic, teams are rotation in the cyclic direction or in clockwise direction. Tabular, in the form of the tabular. So on the way of their representation we draw the fixture in the league. Question number 7. Explain the speed. And what is speed? Improve its method. So speed means to cover the maximum distance in the shortest time is known as speed, and there are the several methods
देयर आर द वेरियस मेथड टू डेवलप द स्पीड. सो हमें क्या करना होगा, वहां पे इसको एक्सप्लेन करना होगा. ये आपका क्वेश्चन मेनली 3 मार्क और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ओबेसिटी. 5 मार्क क्वेश्चन, हाईली वेटेज क्वेश्चन. Define obesity. So see, in chapter number 3, the question is, and this chapter is depends on the various preventive measures, and it's about the lifestyle disease. So in our syllabus, we have the 5 lifestyle diseases like obesity, asthma, back pain, diabetes, like that. So उनको हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, सो उसके बेसिस पे उसका आसन, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, बेनिफिट्स आपको लिखने होंगे. सो मेनली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द 5 मार्क, सो इट्स वन इंपॉर्टेंट वन. डिस्क्राइब द पर्पस, procedure, equipment required and scoring खेलो इंडिया फिटनेस सेंस. सो वी हैव वी टॉकिंग अबाउट दिस साई टेस्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, डेफिनेटली आपको मिलेगा. और इन 1 मार्क पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकते हैं. सो साई टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. One is for the junior category, or we can say primary. Second one is the senior category, secondary category. In the primary category, the age group is between 5 to 8, and in senior category, the age group is from 9 to 18 years. Is for the school going children. Question number 10 is Big Five theory. For this one, you have to write it, learn this one, ocean term, ocean. So if you learn the ocean term, it is the Big Five theory. Is an acronym. O for openness, C for consciousness, E for extraversion, A for agreeableness, and for neuroticism. So these are the full form of the ocean, and this is about the personality. In the Big Five theory we use in the personality, means chapter number 9. Mental imagery is also from the chapter number 9. So what we make the imagination in our mind. So this is mental imaginary, and it is very beneficial in sports, and sometimes disadvantage if we think in the wrong way, so it will be very harmful for us. So the image should be proper, image should be good. Next one, question number 12. Define 3 trajectory factors affecting projectile trajectory. So first one, what is trajectory? So trajectory, suppose this is a one ball and we throw in the air from this point. So this path followed by any object is known as the trajectory. और हम क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को जाने को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा के अंदर रिलीज करना, उछालना, फेंकना इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल. और जिस रास्ते से वो फॉलो होके जाएगा उस रास्ते को हम बोलेंगे ट्रैजेक्टरी. सो क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल. सो जब हम किसी को ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, सो कौन से फैक्टर्स हमारे इसके ऊपर इंपैक्ट होंगे. सो सबसे पहले देखिए स्पिन. हम अगर बॉल को स्पिन करेंगे, सो हमारा जो फेंकने का जो एंगल होगा या स्पीड होगा वो रिड्यूस या इंक्रीज वहां पे होगा. सेकेंड वन, हम किस एंगल पे रिलीज कर रहे हैं उसका इंपैक्ट होगा. अगर हमने 45 डिग्री पे थ्रो किया, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा. 60 पे थ्रो किया तो अपसाइड डायरेक्शन में क्या होगा, ज्यादा जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कम कवर करेगा. 45 पे वो ज्यादा जाएगा. सो दिस वन लाइक दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ट्रैजेक्टरी. ऑब्जेक्ट भारी होगा, डिस्टेंस कम जाएगा, हल्का होगा, डिस्टेंस आगे जाएगा. सो दीज आर दी फैक्टर्स. नेक्स्ट वन, डिफाइन स्ट्रेंथ. Explain the methods to develop the strength. So strength, what is strength? Strength किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे लगने वाली एनर्जी है उसको. रेजिस्टेंस और फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इज नोन एज द स्ट्रेंथ. There is several methods like with the help of isometric, isotonic, isokinetic, we develop the strength. So these are the types. In this method, we develop the strength. Next one, explain the methods of improving flexibility. What is flexibility? Flexibility is the range of movement
ओके, द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट, कि हम एक पर्टिकुलर जॉइंट्स को कितना हम स्ट्रेच कर पाएंगे. सो दिस वन is your flexibility. And the method, so there are the several methods just like the PNF method, ballistic method. Then we have the stretch method, stretch and holding method. With the help of this one, we can increase our flexibility. Next one, what is seeding? Seeding from chapter number 1. Explain by giving suitable example the method of giving spatial seeding. So in seeding method, we place the better teams, good teams in the opposite direction, so they cannot meet in the early round, and this is basically we doing for to remain the entertainment. क्योंकि एक जो रोमांच होगा मैच का वो बना रहेगा. अगर सपोज करें इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर स्टार्टिंग में हो जाएगा, हमें मजा नहीं आएगा. हम चाहेंगे दोनों टीम्स कहाँ प्ले करें, इन द सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल और दी फाइनल्स. जो इंजॉयमेंट क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा. दैट्स व्हाई द गुड टीम्स विल प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि जिसकी वजह से वो अर्ली राउंड से उनके मैचेस नहीं है. व्हाट इज सेल्फ टॉक? खुद से बात करना. व्हाट इज सेल्फ टॉक? खुद से बात करना. 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन. हाउ आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ टॉक इंपॉर्टेंट? एलोब्रेट विद द एग्जांपल. सो सेल्फ टॉक, खुद से बात करना. अब हम खुद से बात दो तरीके से कर सकते हैं. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन डिप्रेस हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो, क्या हो गया, लाइक दैट इन नेगेटिव वे. वन इज द पॉजिटिव वे. सो हम किस तरह से हम अपने आप से बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी से अपनी इमेज बना रहे हैं. सेल्फ स्टीम, सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजनरी आर द पार्ट ऑफ दिस साइकोलॉजिकल टर्म, साइकोलॉजी चैप्टर. तो फॉर इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस, हाउ वी कोऑर्डिनेट विद आवरसेल्फ, अपने आप के साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे. सो दिस इज अबाउट द सेल्फ टॉक. Highlight the importance of intramural and the extramural competition. So many times question will be asked. Intramural, intra means interior, mural means wall, extra means outside, mural mean wall. The event that are conducted inside the wall, inside the campus or within the same organization, it is known as the intramural. The event that is conducted outside the wall, outside the organization or between the organization, inter-school event. Inter-house is example of intramural. Inter-school is example of the extramural. Question number 18. List down various community sports program and explain any two in detail. So what are the benefits of organizing community sport program? Community sport program means any event that we organize for the society, in our neighbor, for aware the people. So these are known as the community sports. For example, run for unity, run for specific cause, to aware about the menstrual hygiene, for aware about the heart, and for just like in COVID-19, to aware the people, we can conduct the community sports program. So what are the benefits? To aware about the people, to aware about the cause. Mainly we conduct the community sports. Osteoporosis. So osteoporosis is related to the bone density, in which the bone density is reduces. And this question is from chapter number 2, from children and women in sports. 3 mark or 2 mark question. Explain the meaning of various postural deformities. Same question from chapter number 2. So there are various postural deformities are there due to the sitting posture, due to the habit. In some persons, postural deformities are occur, just like the knock knees, bow legs, round shoulder, and many more. So these are the postural deformities ki due to some reason, due to environmental factors, genetic cause, due to the some food, proper unbalanced diet and hygienic food. So in some person, this kind of deformities are developed. So this one is known about the postural deformities, कि posture में कोई कमी हो जाएगा. Next point 21, female athlete try. So try means few things. So basically in female we talking about the female कि वो basically sports के अंदर इन 3 चीजों से सफर करते females के अंदर. First one, eating disorder उनके अंदर होगा. Then one is amenorrhea related to menstrual, and third one is the osteoporosis. So these are the 3 things
So just make the triangle. First one is for eating disorder, osteoporosis, then eating disorder and the amenorrhea. In amenorrhea, there's two types: primary amenorrhea and the secondary amenorrhea. So these are the female athlete, right? So this is 3 mark question asked many times. Question number 22. Benefits and contraindication of Matsyasana. 5 mark question. From yoga chapter, if the question is asked from the yoga chapter, 99% the question is asked in the 5 mark. In that you have to write it down, the benefit, contraindication, procedure and the stick diagram. So ये सब चीज अगर आप वहां पे लिखते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सो आपको 5 marks आपको वहां पे इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. दिस इज वेरी इजी वन. सो इफ यू नो दिस संस्कृत वर्ड और हिंदी वर्ड, सो आप you can easily translate Matsyasana means fish pose. Important question 23. How physical activities are helpful for children with special need? And second one, explain strategies to make physical activities accessible for them. So this is 5 mark question, or sometimes asked in the 3 mark. So how physical activities, he likes for the special child, if the person is doing the physical activity, so how it beneficial, physical activity कैसे helpful होगा, उनका physical status improve होगा, physical, then mental, psychological, will correlate कर सकते हैं, better communication, like that. Strategies, we make many strategies. We have to create the good environment, we have to create good equipment, modify the rules. Adaptive physical education are the part of the strategies. CBS 2020, last year 2024 में भी क्वेश्चन था. Pitfall of dieting. Dieting to lose weight directly affect your health. Sometimes we choose wrong way to reduce our weight. So due to that, the persons are facing so many difficulties. So you have to write in a essay format and you write in the pointers कि क्या impact होंगे, pitfall dieting क्या है, उसके क्या impact होंगे health पे. 25. Macro and the micro. So this is from the nutrient chapter. Macro means ज़्यादा. So the nutrients we take in the major portion or in the big amount, it is not the macronutrient. Just like the carbohydrate, protein and the fat, CPF. Micronutrient that required in the less quantity, vitamin and the mineral. So these are the micronutrient role. Macronutrient the activity perform करने के लिए, carbohydrate provide the energy, protein we required for the bodybuilding, fat is just work like a lubricant in our body, and for the internal organs is the very necessity. Then micronutrient is also very necessity part, we require the less amount but for the proper functioning of the body and to prevent from the disease. Vitamin and minerals are very important parts, like the calcium is good for our bone density, we require the vitamin D for bones, so like that. Question number 26. Johnson-Matheny motor eligibility test. This is new test that is introduction in our syllabus. Johnson-Matheny. So Johnson-Matheny is also known as the motor eligibility test. In this test, there are the 4 batteries are there. 4 batteries, 4 items. So we can say, what are they? First one is front roll. Second one is back roll. Third one is jumping, half turn, and jumping full turn. These are for the 4 items that are part of the Johnson-Matheny motor eligibility test. First 3 tests, front roll, back roll, jumping, half turn is for girls, and these 4 tests are for the boys. Question number 27 from the same chapter, test and measurement, Rickley and Jones fitness test. So purpose to find out the strength, ability for the senior citizen, or it is also known as Fullerton functional test. So Rickley and Jones is for the senior citizen
from 60 to 94. With the help of the Rickley and Jones test, we find out their ability. So explain the procedure of its any two test items. So in this there are six test items there for flexibility, lower body flexibility, upper body flexibility, then for strength, then for speed, then for endurance. So these are the six test items in the Rickley and Jones. Howard step test. In 2024, 3-mark question is asked. One is for formula, two is for calculation. So total 3-mark question. How in Howard step test we use the one formula, and in Howard step test there are two formulas: short-term formula and the long-term formula. Mainly question is asked from the short-term formula. What the formula? 100 into test duration upon 5.5 into pulse count. In the examination on paper, test duration, pulse count is given. Rest of things you have to put by the formula and you have to solve it. So 100 in test duration maximum is 300 second. Maximum is 300 second. If duration is not given, so you have to assume it 300 second means 5 second, and we have to take the test duration always in the second. Then pulse count. Suppose 80, 90, 100, 120 in the 1 to 1.5 minute. So this is the formula for the Howard step test. If we have the long-term formula, instead of 5.5 we use the 2, and here we take the 1 pulse count, but in long term we take 3 pulse count. This is the only difference between the short term and the लॉन्ग टर्म कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम 5.5 की जगह कितना यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे. यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म में एक पल्स काउंट लिया था, यहाँ पे हम 3 पल्स काउंट मींस 3 रीडिंग हम कंडक्ट करेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, एंड यू हैव टू पुट इन दिस. रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम. 100 into टेस्ट ड्यूरेशन मींस टाइमिंग, 2 into 3 sum of 3 pulse rate. Okay, so how we calculate or measure the Howard step test. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ. कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है. सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वहां पे कौन से वर्क करेंगे. सबसे पहले वहां पे आपका वर्क कर सकता है कि फाइबर्स, कि कौन से फाइबर. अगर किसी पर्सन के अंदर शॉर्ट ट्विस्ट फाइबर है या फास्टेस्ट फाइबर है, सो लाइकवाइज कि वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम किसी भी पर्सन की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से उस पर्सन की स्पीड में इंपैक्ट हो सकता है या उसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा हो सकती है. सो दिस इज द अबाउट द फैक्टर्स. नेक्स्ट वन इज soft tissue injury. We already discussed. This question is asked in the 2017, and mainly 3-mark question will be asked. Talent identification, talent development. This question is from chapter number 10. So what is talent identification? Suppose you are the coach and the organization give you some students to you. So how do you identify? The first one, we have to conduct some games. Okay, then we have to identify the talent. Then for after identifying कि आपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, एंड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आपने कुछ स्टूडेंट्स को वहां पे ऑब्जर्व किया और उनको आपने कलेक्ट किया, लाइक उनको फिर आपने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया. मींस अब आप क्या करेंगे, टैलेंट डेवलपमेंट करेंगे. टैलेंट डेवलपमेंट करने के बाद उनको आप कॉम्पिटिशन में लेके जाएंगे, उसको आप बाद में क्या करेंगे, आप नेशन को आप डिलीवर कर देंगे. सो दिस इज द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड द टैलेंट डेवलपमेंट. पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स को, उसके बाद उनको डेवलपमेंट करेंगे. फ्रिक्शन, चैप्टर नंबर 8. व्हाट इज फ्रिक्शन? राइट द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन. सो यू नो दैट फ्रिक्शन मींस द अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन. एंड फ्रिक्शन की वजह से दो बॉडीज के बीच में हीट प्रोड्यूस भी होगा. इन बिटवीन द टू स्मूथ सरफेस द फ्रिक्शन इज हायर, फ्रिक्शन इज लो, वेरी लो, और बी जीरो. इन बिटवीन द टू रफ सरफेस द फ्रिक्शन इज हायर. Friction is sometimes is very advantage, sometimes is very disadvantage, like that if the person is doing the ice hockey, so in that case the person require the less friction.
In some games, for the stability, we require the friction more. So these are the advantage and the disadvantage of the friction. In like way, you can write it down. Explain pace run method and methods to develop the speed. So there are the various methods. So first, speed is the quickness of the movement of a limb, or we can say to cover the maximum distance in the shortest time is known as the speed. So पेस रन, सो पेस रन मीन्स एक पर्टिकुलर पेस पे आप क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको रन करते हुए रहना. इन दैट मेथड यू विल डेवलप द स्पीड. रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन पर्सनैलिटी. सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन यहां से आपको पूछ सकते हैं. 2015 में क्वेश्चन हुआ था. सो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में किस तरह से हेल्पफुल होगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी सिस्टम अच्छा रहता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा रहेगा. सो ऐसे फॉर्मेट में आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. बिग 5 थ्योरीज, ऑलवेज रिमेंबर. ओशन, O for openness, C for consciousness, E for extraversion, F for agreeableness, and N for neuroticism. Aggression, गुस्सा. State any 2 types of aggression. Aggression is very necessity in sports, not in normal life, but in sports is very necessity. With the help of the aggression, we channelize our energy. So aggression is of 3 types. Hostile aggression, then we have the instrumental or we can say channeled aggression, then we have the assertive behavior. In a hostile one, we harm the players or the players harm each other, but in the channel or instrumental, we channelize our aggression in the right form. And the last one is the assertive behavior. This is the positive way. So these are the 3 types of the aggression. How can we enhance the sports performance with the help of the self-talk and the self-esteem? Self-talk and self-esteem is very very important. कि आप अपने आप से, हम बोलते हैं ना कि कहां तक जा सकते हैं, मैं ये मेरी सेल्फ स्टीम का सवाल है कि मैं इससे ज्यादा चीजें यहां तक नहीं जा सकता. सो दिस इज अबाउट द सेल्फ स्टीम. सेल्फ टॉक, खुद से आप किस तरह से बातें करते हैं. अगर आपका सेल्फ स्टीम उस चीज को करने की इजाजत नहीं देता, आप वो काम नहीं करेंगे. आपको लगता है कि हाँ मैं यहां तक जा सकता हूं, तो दिस इज द सेल्फ स्टीम. सेल्फ टॉक, आप बातें अपने आप से अच्छे से कर रहे हैं, गलत वे में कर रहे हैं, नेगेटिव वे में कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी क्या होगा, गलत होगा. अगर आप अपने आप को, अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, सो इट विल क्रिएट द गुड रिजल्ट. What do you understand by the goal setting? What is goal setting? Goal setting means a particular aim जिसको आप आगे सोच के रखते हैं. So goal setting क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एम तक पहुंचने का एक रास्ता, एक पर्टिकुलर गोल जहां पे हम जाना चाहते हैं. अब उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं. There's many factors behind that. Like goal should be realistic. बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए. If a person scores 50% mark, so realistic goal ये नहीं होगा मुझे 100% आ जाएंगे. No, realistic should be 50 को आप 60 कर सकते हैं, 70 कर सकते हैं. If like that for a teacher, suppose for me my salary is 20,000. ओके, सो अगर मैं 20 को चाहूंगा कि मुझे एक मंथ के अंदर मुझे 1 लाख की सैलरी मिल जाए, सो इट नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट आई टू डू फॉर 20, देन 30, 40, 50. इन अ स्मॉल वे वी कैन अचीव आवर गोल्स. So this is goal setting. Next one is what is endurance. What is endurance? To do any activity for a longer time, for a longer duration without any fatigue is known as the endurance. How can endurance can be developed? Through the fartlek method. What is fartlek method? The fartlek method, we suppose we're starting from a specific point and we go by, and at the different point, in this point we came by the river, road, hill, uphill, downhill, like that. In a natural way, we are doing the any activity, we are doing practice for the endurance is known as the fartlek method, and this is also known as Swedish play method. So जब हम कोई भी एक्टिविटी एक नेचर के अंदर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, fartlek method. Interval training method
कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप बीच का इंटरवल देके आप अगर करेंगे, सपोज आपको स्प्रिंट करना है, ओके, सो जस्ट लाइक दैट दिस इज आवर ट्रैक। इन ट्रैक आपने रनिंग स्टार्ट किया, दिस इज 400 मीटर ट्रैक। इन इंटरवल सबसे पहले हमने एक राउंड कंप्लीट किया, देन यू हैव टू टेक 10 सेकंड रेस्ट, अगेन यू आर डूइंग दिस वन। सो डिस्कस इंटरवल ट्रेनिंग। सो कि आप इंटरवल ट्रेनिंग इज द मेथड टू डेवलप द एंड्योरेंस। सो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी अपने आप को हायर रख सकते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू डेवलप द एंड्योरेंस। व्हाट इन द फार्टलेग मेथड? इन फार्टलेग मेथड सपोज हमारे पास में सिर्फ फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, सो वहां पे इश्यूज आएंगे। एक इंटरवल मेथड में एक स्पेसिफिक ग्राउंड में जो आप वहां पे करते हैं प्रैक्टिस, वहां पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। In the continuous training, so this is just opposite of the interval training. In interval, we give the interval or give the break, but in the continuous method, the person is doing the activity in a continuous method. So the intensity is low in continuous method. In interval training, intensity is higher, heartbeat is higher. In continuous method, we doing an activity for longer duration at one pace. We maintain one pace in that. Discuss the method of speed development. अब speed को हम किससे develop करेंगे? So there are the several methods to develop the speed. Next one is explain the methods of developing the flexibility. So what is flexibility? कि अपने range of joints को stretch करना, maximum abilities को. So this one is the flexibility. And what are the methods? PNF technique, static stretching, ballistic method. So these are the some methods to develop the flexibility. And flexibility divided in two categories: active flexibility and the passive flexibility. In active flexibility, without any support we are doing that. In passive flexibility, we are doing with the help of some object or some person. Next one is explain the different types of coordinative abilities. So what is coordinative abilities? Coordinative abilities means the smaller task involved in the larger task. Coordination is the ability to repeatedly execute a sequence of movements smoothly and accurately. Just like in badminton, we require the lots of coordinative abilities जहां पे many sense organs are working together. Okay, so there are the different methods, different coordinative abilities are there. This question is from chapter number 10. In 5 mark or 3 mark it will be asked. So these are the some important questions that are very important for your coming examination, that is on 17th of Feb. If you have still any doubt, any confusion, you drop your message, or you can tell us on which topic you require the more videos. आप हमें easily connect कर सकते हैं, बता सकते हैं. For watching us, for supporting us, thank you so much, and please share, like this video with your friends and the person that required. Thank you so much.